हेलो हेलो हेलो। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं या तो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, सही जगह पे आए हैं। वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लैनेट वेल्थ। आज हम इसी चैनल के तहत बात करने वाले हैं मेरी आईपीओ सीरीज की जो अगली आईपीओ भी चल रही है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में आज बात करने वाले हैं कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट इनटू मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नॉट। इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। आई एम ब्रिजेश परिक, father of two lovely kids, husband to a loving woman. I'm an educator, now turned into a well coach, and I'm on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially very free life and achieve financial freedom during your life. तो मेरे इसी मिशन के तहत ये जो वीडियो आज मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के आईपीओ के बारे में, उसमें एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए समझते हैं कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स आपके लिए क्या ऑफर पे लेके आ रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं और फिर बाद में एंड में उसके एनालिसिस और बाद में माई रिकमेंडेशन। So Mazgaon Dock Shipbuilders is a mini Ratna Category 1 status company in defense public sector undertaking shipyard under the Department of Defense Production, which is hitting the primary capital market with its initial public offer of equity shares of the face value of ₹10 each. The IPO will open for public subscription from September 29 to October 1st, which means it has opened yesterday and subscription is going on today and it will be open for tomorrow as well. The equity shares of the company will be listed on the BSE and NSE, both the exchanges. It's a book building process IPO. The price band is rupees 135 at the lower end to rupees 145 at the upper end per equity share, and the market lot is 103 shares, and the minimum order which you need to apply while if you are opting to apply for the IPO is 103 shares. तो चलिए बात करते हैं कि ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर बिजनेस क्या है। So Mazgaon Dock Shipbuilders is a defense public sector undertaking shipyard under the Department of Defense Production, Ministry of Defense, with maximum shipbuilding and submarine capacity of 40,000 deadweight tonnage. DWT is the industry term. The company is engaged in construction and repairs of warships and submarines for Ministry of Defense and is used by Indian Navy and commercial clients. It is a wholly owned government of India company. मतलब the entire equity is owned by the government of India, confirmed with the Mini Ratna 1 status in 2006. The company's business comprises two operating divisions. पहला shipbuilding division. This division undertakes building and repairing of naval ships, and दूसरा submarine and heavy engineering division. This division includes building, repairing, and refitting of diesel electrical submarines. So there are two things, right? Since 1960, the company has built total of 795 vessels, including 25 warships from advanced destroyers to missile boats and 3 submarines. They have also delivered cargo ships, passenger ships, supply vessels, multi-purpose support vessels, water tankers, tugs, dredgers, fishing trawlers, barges, and border outposts for various customers in India as well as abroad. As of July 31, 2020, the company's order book for shipbuilding and submarines and heavy engineering was valued at around rupees 54,074 crores, comprising of 3 major shipbuilding projects and 2 submarine projects. So as of now, 31st July को कंपनी के पास already 54,074 करोड़ के orders already आ चुके हैं. Let us now look at the arguments in favor of the business. मतलब ये business कैसे अच्छा है. So Mazgaon Dock is the only public sector defense shipyard to build destroyers and conventional submarines for the Indian Navy, so it enjoys monopoly in this segment. Mazgaon Dock's healthy order book provides revenue visibility. The company has a strong order book with rupees 541 billion, जो कि हमने पहले देख लिया है, which is to be executed in next 6 to 7 years. Furthermore, the company also expects the Indian government's Atmanirbhar Bharat and Making India plan
to positively impact private and public shipyards in coming years as domestic manufacturing picks up. So it will go in favor of the company. Recently, the government has taken steps to ban 101 defense items, which creates opportunities in India's defense sectors and also for the company. MAzgaon Dock is strategically located in Mumbai on the west coast of India. The company's customers, that is Ministry of Defence and Indian Coast Guard, and its vendors are based in Mumbai. So this prime location results in greater efficiencies and provides it a strategic competitive advantage over its peers. Financially, the company's top line has decent growth in the last couple of years. Its total income was rupees 42,748 million, rupees 50,276 million, and rupees 52,046 million, and rupees 55,353 million for the fiscal year 17, 18, 19, and 20 respectively, and the profit stood at rupees 5982 million, 4961 million, 5324 million, and 4770 million respectively. Furthermore, the company also has an uninterrupted dividend track record for the last 15 years and is completely debt free. Now, what are the risk factors? Business के risk क्या है? So COVID-19 had an adverse impact on the company's business and operations, and the extent to which it may continue to do so in the future is uncertain and cannot be predicted. Travel restrictions and closure of the shipyard is expected to have an impact on the company's ability to operate and achieve business goals, primarily on account of lower capacity utilization. But this is a short-term thing. The company is exposed to huge client concentration risk and as it is primarily dependent on Ministry of Defence for defence orders. The orders are mostly awarded on a nomination basis by the Ministry of Defence for use by the Indian Navy, and there is no assurance that future defence orders will be awarded to the company by the Ministry of Defence. The new defence procurement procedure policy, where private players are seen as a strategic partner to build defence capabilities, will increase competition for MAzgaon Dock shipbuilder, which until now enjoyed the monopoly. The future scenario is monopoly is not going to be there for the company. Recently, the government of India increased FDI limits from 49 to 74% via the automatic route. This will also increase competition for the company and the domestic industry from global players. So these are the risk factors. कंपैरेटिव वैल्यूएशन मैट्रिक्स मतलब इसी तरीके की जो लिस्टेड कंपनी है उसके कंपैरिजन में कंपनी की क्या है. सो कोचिन शिपयार्ड जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, उसकी ईपीएस 48.05 है, उसकी नेट एसेट वैल्यू 283 है और उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 7.6 है और उसकी रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज अराउंड 16.98. रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग विच इज अ प्राइवेट कंपनी, उसकी फेस वैल्यू भी 10 रुपये है, उसकी ईपीएस -23.87 है, उसकी नेट एसेट वैल्यू -765.1 है और उसकी प्राइस टू इक्विटी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उसकी प्रॉफिट नहीं है और रिटर्न ऑन नेटवर्क भी एप्लीकेबल नहीं. गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की अनकॉन्सोलिडेटेड जो रिजल्ट्स है उसके हिसाब से उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, ईपीएस 14.27 है, नेट एसेट वैल्यू 90.81 है और प्राइस टू अर्निंग इज अराउंड 14.91, whereas return on net worth is around 7.01. तो अगर उसी के सामने हम मजगांव की देखें तो अगेन उसकी ईपीएस अराउंड 21.36, नेट एसेट वैल्यू इज 152.17 और नेट रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज अराउंड 15.54. So looking at the comparative valuation, our recommendation for this company is apply but not for listing gains but from the perspective of long-term gains from the fundamentals perspective. राइट. तो अगर आपको इस कंपनी को अप्लाई करना है तो आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हैं बट लिस्टिंग गेन ये ऑफर करने वाली शायद नहीं है. राइट. सो आई होप ये जो वीडियो मैंने आपसे शेयर किया तो की डिसीजन फैक्टर ओवर व्यू ऑन द आईपीओ मतलब हमारी आईपीओ की व्यू के ऊपर की डिसीजन फैक्टर क्या है. So despite consistent sales growth from FY17 to FY20, net profits have been volatile and have been witnessed decline. This is mainly due to sharp increase in expenses, specifically procurement of base and depot spares over the last 2 years.
As a result, operating margins of the company have also suffered. One must note that the company is completely debt-free. In terms of valuation, at the upper price band of rupees 145 per share, the company trades at 6.2 times of its FY20 earnings. The issue size is of rupees 4.4 builder for a 15% stake. The price to book value ratio is also undemanding at below 1%, below 1, sorry. The decline in net profit has meant moderation return on equity from 20% in FY70 to 15% FY20. Another concern is the working capital intensity in the business. The business needs to maintain a lot of inventory, resulting in inventory days running in excess of 300 days. That said, the current order book offers strong visibility for the revenues, although one must note that with government orders, executional risk remains. तो ये जो की डिसीजन फैक्टर है उसके बेस पे मैंने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो. लिस्टिंग गेट शायद वो दे ना दे, दैट इज नॉट श्योर, राइट. तो ये मेरी जो आपकी एनालिसिस मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है मजगांव डॉक यार्ड शिप बिल्डिंग यार्ड की. तो इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और इफ़ यू विश टू फोकस ऑन कीपिंग ग्रोइंग योर मनी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ यू विल रिसीव ए नोटिफिकेशन. आप मेरे ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं planetwealth.in पे. आप एजुकेशनल वीडियोस मेरी वेबसाइट पे planetwealth.in पे भी देख सकते हो और थर्ड पार्टी फाइनेंशियल लिटरेसी वेबसाइट moneycraft.com पे भी जाके अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकते हैं. आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं facebook.com/planetwealth से, और मेरे फाइनेंशियल वेलबींग ग्रुप है फेसबुक में, उससे भी जुड़ सकते हैं. बट द बेस्ट थिंग टू डू इज यू कैन स्टोर माई मोबाइल व्हाट्सएप नंबर एंड सेंड मी, ऐड मी करके अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए. मैं आपकी नंबर मेरे फाइनेंशियल लिटरेसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल दूंगा एंड देन यू विल बी कीप ऑन रिसीविंग एनी काइंड ऑफ अपडेट. ये जो लिटरेसी वीडियोस या कंटेंट में अपलोड करूंगा वो आपको मिलते रहेंगे. प्लीज नोट डाउन माय व्हाट्सएप नंबर. इट इज 9328190022. रिपीट करता हूँ, 9328190022. उसको आपको स्टोर करना पड़ेगा प्लेनेट वेल्थ से. अगर आप स्टोर सेव नहीं करोगे इसको अपने मोबाइल में, तो आपको मैं अपनी लिटरेसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डालूंगा तब भी आप मैसेज रिसीव नहीं कर पाओगे अगर आपने स्टोर नहीं किया. तो ये स्टोर करें और फिर मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, ऐड मी एंड योर नेम, देन आई विल ऐड यू इनटू माय ब्रॉडकास्ट लिस्ट. So once again, thank you for watching this video. May God shower abundant wealth to you. May you achieve financial freedom in your life. And मिलते हैं अगले वीडियो में. Thank you.